today's agenda and tomorrow's agenda, session 6 and session 7, dated 13th April and 14th. This is here. The first part on 13th, which is today, we will discuss the appellate jurisdiction. Either it is in the extraordinary appellate jurisdiction or in the appellate jurisdiction under article or a statutory civil appeal and a statutory criminal appeal along with concerned Supreme Court rules order. And in between, in the start, we will discuss about analysis of Form 28, which is the most important part for the drafting. So today's session is not only dedicated to paper 1, this is also dedicated to paper 2. And simultaneously and primarily, it is further dedicated to the practice and procedure of this court. So what I would like to discuss today, and which manner I would like to discuss. First of all, we will discuss about the constitutional part, which is coming from Constitution. Then we will enter into the Supreme Court rules and otherwise. One more thing I would like to show you. That is the part 2 in this particular document, which is the appellate jurisdiction from order 16 to 20. We will see the general part, order 16 to 18. We will further see the civil appeal order 19, criminal appeal order 20, SLP order 21 and 22, and under a special act, 2 orders is dedicated, order 23 and 24. Let me just recall from last session. Within the Supreme Court rules, order 16 to 24 were dedicated for appellate jurisdiction. And out of them, 1, 2, 3, that was the start, meaning thereby from 16 3 orders, 16, 17 and 18. It was dedicated for the general purpose of appellate jurisdiction. And then order 19 for the civil appeal, order 20 for criminal appeal, order 21 for SLP civil, order 22 for SLP criminal, order 23 for Advocate Act, and order 24 for this Consumer Protection Act. So this is the basically a structure for today's agenda. What we will discuss, that is part 3. And tomorrow's agenda is dedicated for the, it was a part 2 and this is the part 3 of the Supreme Court rules from order 25 to 46. This is for the tomorrow's agenda. Today, we will primarily focus on Supreme Court rules under the light of constitutional law. And first of all, I would like to start this agenda from SLP. Under Article 136. So, let us come to the constitutional part directly. So, the entire appellate jurisdiction under Constitution of India is dedicated from
Article 132, Article 133, Article 134, and Article 136. Isn't it? Let us start from Article 136. Let me discuss before going to 136. Let me recall this Article 132, 133, and 134. What is this appellate jurisdiction under Article 132? The appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeal from high courts in certain cases. The point is very clear and which is specified to very certain cases. And what are those certain cases? Let us read this Article 132. An appeal shall lie to the Supreme Court. One more thing I would like to explain before going or reading to the constitutional part. Let me focus on this particular first part of this particular agenda, which is the source, power, jurisdiction, conditions, rights, remedy, and of course, after that, procedure. So these are the 7 ingredients: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, which we will trying to find out where is available and what is that. Am I clear on this particular juncture or not? Yes, sir. Yes, sir. Sure. So once we will read the part or constitutional part or provision of law, we will focus on this particular 7 ingredients. We will exactly trying to find out what is that among all these 7 points. So let us come to this particular part, the constitutional part here, the appellate jurisdiction. Let us start reading this Article 132(1). An appeal shall lie to the Supreme Court. So the word is treated here, used here is the shall and to the Supreme Court and from. Let's focus on that point. This is an appeal. Shall means mandatory. There is no any discretion. Lies to the Supreme Court where? So the jurisdiction of the Supreme Court is started from this word. An appeal shall lie to the Supreme Court. This is the jurisdiction created for the Supreme Court for the purpose of an appeal. But the narrow point is from where? From, this is the condition, from any judgment, decree, or final orders. This is condition number 1. Nothing other things is there. Only judgment, decree, and final order. Of another condition is of a high court in the territory of India. Not any tribunal, not any other court, only high courts. So this is the another condition. Now the condition is expanded, the scope is expanding, whether in civil, criminal, or other. And the last condition is if. So everything would be effective only when this if condition is satisfied. And that condition is if the High Court certifies under Article 134A.
So this is the one condition High Court certificate is required under Article 134A. And specifically, one more condition is being imposed on that, and that condition is the case involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution. Just a minute. Now, I want to point out certain thing into this particular part, which you need to focus very carefully. Once jurisdiction is created, an appeal shall lie to the Supreme Court means an jurisdiction is created for the Supreme Court for the purpose of an appeal. But appeal is a very general word. Which appeal? Which condition it should be wasted certain jurisdiction? The condition is further written there from any judgment, decree or final order, or otherwise it's not written there. Or matlab, the things is what any word means unlimited, but the confinement is to the judgment, decree and final order only. These are the very tricky part. Once you are saying any, means this is unlimited. Once we are saying judgment, decree, final order, meaning thereby very specifically we are pointing out and nothing other is incorporated into that. So there should be certain judgment or decree or final order. So all these three things, judgment, decree or final order having not these are not the interim nature. All these are for the purpose of these are for final nature. What is this? What is the difference between this decree, judgment and final order? Judgment is determination of issues, either one or anyone, or in between, or finally. Decree is the final outcome, or anything the final order, which may not be judgment or decree. The things is there is a used word is or, meaning thereby any one of three is required, either judgment or decree or final order, or the combination of any two or three. Am I clear up to this point? Without any being confusion, we are not hitting or approaching to the Supreme Court for against any interim order of High Court or otherwise, except all these three. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. मैं clear मैं नहीं, Constitution itself it is saying कि जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि वहां वर्ड और यूज किया हुआ है, बट इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। एंड जजमेंट जो भी होगा वो किसी भी नेचर का है। मैं कंडीशन को पेन डाउन करूं और लिखूं कि कितने कंडीशन यहां मेंशन किए हुए हैं, तो जरा आप ध्यान से देखिए।
मैं फिर से कंडीशन की काउंटिंग कर रहा हूँ, कंडीशन क्या है वो अपनी जगह पर है, आई एम जस्ट काउंटिंग। और एग्जाम में ये काउंटिंग आपको कंप्लीट करने हैं यदि आप आंसर इससे रिगार्डिंग आप लिखेंगे। So 5 conditions are there. यस, तो फर्स्ट इज फ्रॉम वर्ड यूज किया हुआ है, और वेयर इज दैट? फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हालांकि यहाँ पे दो कंडीशन है, वन इज एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ, this was the first, and after of is the another, a high court in the territory of India। क्योंकि जो फाइनल जजमेंट होगा, डिग्री होगा, ये कहीं से भी आ सकता है, ट्राइब्यूनल से आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आ सकता है, एमएम कोर्ट से आ सकता है, वो नहीं, ओनली हाई कोर्ट। So the another limitation into that, on any judgment, decree or final order, is the high court only। This is condition number 2। but आप रीड आउट कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे, अब समझने के लिए भी और मेमोराइजिंग के लिए भी ये जरूरी है कि इसको ब्रेक करके रीड आउट करें। एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम any judgment, decree or final order of a high court in the territory of India, whether in civil, criminal or other proceedings। तीन, चौथा, if the high court certify under article 134A that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of constitution। Am I clear up to this point or not? मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में और याद करने में ज्यादा परेशानी हो। फिर से मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, और पीछे जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमने इसमें से क्या क्या ढूंढा? वन इज द सोर्स विच इज आर्टिकल 132, अपोज jurisdiction, not specifically any power is written there, but the power of appellate jurisdiction, conditions, but we never ever entered into the right remedy and procedure। We will again enter into the right remedy and procedure, but first of all just do something here which is missing, and the missing part is, what is this article 134A? ये है क्या? So quickly just let us scan what is this article 134A। Before going to 134A, let me just explain all these things, remaining provision of this particular article। Clause 2 is deleted, clause 3 is here, where such certificate is given, any part in the case may appeal to the Supreme Court on the ground that any such questions as aforesaid has been wrongly decided। So the ground is also there, and the word is may। So any party in the case may appeal to the Supreme Court on the ground that any such question as aforesaid has been wrongly decided। And what is aforesaid? And the aforesaid part is under the certificate, which is the case involves a substantial question of law as the interpretation of the constitution। थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, अभी थोड़ा ये बोरिंग साइड्स में लीड करता जा रहा है, उस पे नहीं जाना चाहता।
ये हाई कोर्ट की ड्यूटी है कि वो सर्टिफिकेट इशू करे। अब जैसे मैं कहूं, लॉयर का ये जुरिडिक्शन है कि लीगल नोटिस इशू करे। अब लीगल नोटिस में क्या लिखाना है, कितने तरीके के लीगल नोटिस हो सकते हैं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आपको ये पावर तो किया गया कि लीगल नोटिस इशू करें, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में इशू करें ये भी इंपॉर्टेंट है। और कॉन्टेक्स्ट हो सकता है आपका ये चेक बाउंस का केस भी हो सकता है, अदर केसेस भी हो सकते हैं। तो सबके कंडीशन थोड़े थोड़े वेरी करते हैं। यहाँ पर उसी हिसाब से ये सर्टिफिकेट इशू करने का राइट तो है, लेकिन सर्टिफिकेट पर मैंडेटली ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सर्टिफिकेट पर आपको यहाँ ये मेंशन करना होगा कि द केस involves a substantial question of law as to the interpretation of constitution. सिर्फ इसमें इन्वॉल्वमेंट नरेट करना है कि ये इन्वॉल्व्स होगा, दिस केस इन्वॉल्व्स, दैट द केस इन्वॉल्व्स व्हाट, a substantial question of law as to interpretation of constitution. And of course हाई कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि ये जो केस है वो करेक्टली डिसाइडेड है। दिस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्टली डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट, isn't it? Isn't it? समझिए, इसको लिखना थोड़ी है इंदु मैम। Your voice is not मैंने नहीं मैंने याद करा हुआ था, मतलब मैंने पढ़ा हुआ था ना, मैं समझ रही हूँ अपने से, मुझे याद था। मैं ये चीज यहाँ पर जो पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, हाई कोर्ट ओनली पॉइंट आउट दिस केस इन्वॉल्व्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगले क्लाउज से क्लियर है, पार्टी एग्रीव्ड जो होगी वो ये कहेगी कि दिस क्वेश्चन इज नॉट डिसाइडेड फेयरली, मतलब दे आर एग्रीव्ड। क्वेश्चन इन्वॉल्वमेंट है वो हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा, और पार्टी क्या करेगी, वो इसलिए यहाँ मूव करेगी, अप्रोच करेगी अंडर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल कि wrongly decided, this question is wrongly decided। आप अगले क्लाउज में आप जरा देखिए, आपको एकदम साफ क्लैरिटी आएगी, and which is continuation of that, where such a certificate is given, any party in the case, certainly यहाँ may ही होना चाहिए और may है, तो निश्चित रूप से आना ही पड़ता, वैसा नहीं है। Any party in the case may appeal to the Supreme Court on the ground that, और उनका ग्राउंड क्या होना चाहिए? Any such questions as aforesaid constitutional interpretation has been wrongly decided। हाई कोर्ट सर्टिफाई करती है कि क्वेश्चन है, और ये एजम्पशन है कि वो करेक्टली डिसाइडेड, and because of that some party or any party may be aggrieved of that particular part, और वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करती है अपील अंडर आर्टिकल 132। तो उसका ग्राउंड क्या होगा, क्या होना चाहिए? दैट इज रिटन इनटू दैट कि दैट aforesaid question has been wrongly decided। जस्ट इमेजिन उस पर्टिकुलर केस में जो हाई कोर्ट के सामने है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन ऑन फैक्ट होगा, क्वेश्चन ऑन लॉ होगा, क्वेश्चन ऑन जनरल इंपॉर्टेंस होगा, मेरी सब्सटेंशियल क्वेश्चन भी होंगे। We are not talking about other questions which is not concerned to this court and not important much. Confinement is only regarding a substantial question of law as
interpretation of the Constitution, which is wrongly decided. It's a very pinpointed and guided provision incorporated into Article 130. An explanation is there. Let us check this explanation. Explanation regarding final order. For the purpose of this article means Article 132, the expression final order includes an order deciding an issue, and word use मैं कर रहा हूँ, which is for one, which if decided in favor of the appellant would be sufficient for the final disposal of the case. यदि final disposal हो गया है जिस order से, that is also treated as final order. For example, सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर अप्रोच होता है या हाई कोर्ट में सिंपली वन लाइनर वर्ड लिख दिया जाता है कि डिसमिस, अपील डिसमिस, सेल्फ डिसमिस, और पूरा केस टर्मिनेट हो जाता है. दैट इज सफिशिएंट, ट्रीटेड एज इट इज एंड फाइनल. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. Now, let us move further and again go to this particular part, Article 133, which is certainly little bit different from Article 132. And what is the difference? The difference is appellate jurisdiction. अब मैं यहाँ पर बस एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा. हमने 132 रीड किया, समझा. अब मुझे 133 रीड करते समय जस्ट कंपेयर करना है और डिफरेंस को पॉइंट आउट करना है, उसको नोट करना. कीप इन माइंड. ये एक मेथड है समझने का. दूसरा मेथड ये है कि आप फिर से पूरा रिफ्रेश उसको एक अलग तरीके से. कंपैरेटिव स्टडी एनी टाइम आपके एफर्ट्स को कम करता है और अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करता है. तो हम अभी 133 को रीड आउट करते हैं. एंड अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट. दिस इज करेक्ट. एंड सेम from any judgment, decree or final order. And one more condition is there, and that is the in a civil proceeding of a high court in the territory of India. पहले क्या था? पहले ये था in civil, criminal and other proceedings. And that's the difference. And that difference clearly dedicates this particular Article 133, appellate jurisdiction of the Supreme Court, dedicated to the civil proceedings only. If High Court certifies under Article 134A, and इसके अंदर उस सर्टिफिकेट के अंदर क्या होने चाहिए, वो 3 इंग्रेडिएंट होने चाहिए अंडर दिस सर्टिफिकेट. सॉरी, 2 इंग्रेडिएंट होने चाहिए. And that is that the case involves a substantial question of law as general importance. The word is not only question of law, but here is a substantial question of law, and the nature of that question is general importance. And means mandatory. Once first condition would satisfy, then second also should satisfy, and that is that in the opinion of High Court, the said question need to be decided by the Supreme. So, notwithstanding anything in Article 32, any party. So, what is the meaning of notwithstanding anything in Article 32? So, this clause has overriding effect on Article 132. यदि 132 और 133 की बात आती है, तो this part would prevail. Any party appealing to the Supreme Court under Clause 1 may urge as one of the grounds in such appeal that a substantial
substantial question of law as to interpretation of this constitution have been wrongly decided. क्या मतलब है? क्या कंफ्यूजन होगा आपको? कंफ्यूजन ये होगा कि आर्टिकल 132 में भी सिविल, आर्टिकल 133 में भी सिविल है ना, और आपके पास केस आया, आप कौन से पार्ट को इन्वोक करेंगे? सो 132 आप इन्वोक कर सकते हैं तब जब सर्टिफिकेट के अंदर ये लिखा हो कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लेकिन यदि वहां नहीं लिखा हो और फिर भी वो क्वेश्चन हो, क्या करेंगे आप? 132 इज ब्लॉक, क्योंकि आपको लगता है कि वो क्वेश्चन है। हाई कोर्ट कहती है कि नहीं, हम ये नहीं दे सकते। हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट यहां पर दे दी कि जनरल इंपॉर्टेंस, वहां ग्राउंड ले सकते थे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज इंटरप्रिटेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सेम ग्राउंड आप यहां भी ले सकते हैं as per this clause 2, which says notwithstanding anything in article 132 means article 133 has overriding effect over article 132. Any party appealing to the Supreme Court under clause 1 of 133 may urge as one of the ground, as not only ground but one of the ground in such appeal that the substantial question of law as to the interpretation of constitution has been wrongly decided. अब आप ये देखिए कि ये जो पार्ट था, ये पार्ट है 132 में, 132 में, जो आपको यहां पर भी ये पार्ट दिख रहा है ना? ये ग्राउंड आप यहां पे ले सकते। तो पार्टीज का जुरिडिक्शन अलग होता है। पार्टी अपने ग्रीवांस को रेज कर सकती। सो रेजिंग ग्रीवांस, इट डजंट मीन इट वुड बी डिसाइडेड और एंटरटेन्ड। नाउ ओनस यानी बॉल जो है ना, वो शिफ्ट हो जाता है कोर्ट के पास, और कोर्ट यदि कन्विंस है, और दूसरे शब्दों में ये कहें, इफ वी आर एबल टू कन्विंस टू द कोर्ट yes it is there, then court will treat it as 132 और सब्सटेंशियल क्वेश्चन को वो डील करेगी। यहाँ ये रिलेवेंट नहीं है कि 131 है या 132 है या 32 है। कहीं भी यदि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और कोर्ट कन्विंस हो गई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉट ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, मीनिंग देयर बाय कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नीड सर्टेन इंटरप्रिटेशन, मीनिंग देयर बाय कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द एम्बिग्युइटी regarding or confusion regarding the interpretation of the constitution. That is called in nutshell and optimized word में हम कहें a substantial question of law as to interpretation of the constitution. Constitution का कोई भी provision हो सकता है, but it must be the part of constitution. Then 5 जजेस बेंच बैठेगी उसको सुनने के लिए, मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में मेंशन किया हुआ है और इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया हुआ है। तो दिस कंडीशन कब अप्लाई होगा, ये जो कंडीशन मैं बोल रहा हूं कब अप्लाई होगा? वंस कोर्ट कन्विंस और वंस पार्टी अप्रोच। कौन सा कंडीशन? दोनों अलग अलग चीज। पार्टी अप्रोच एंड कोर्ट कन्विंस दोनों अलग चीज है। वंस कोर्ट कन्विंस देन इट शुड बी रेफर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी मैटर में
जो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता है, कहीं भी आइदर एसएलपी हो, सीपी हो, बेल हो, एनी मैटर, यदि कोर्ट कन्विंस हो जाए कि देयर इज सर्टेन interpretation of constitution is involved or a substantial question of law as to interpretation of this constitution has been raised and is there, then certainly it would be heard by the constitution. मैंने अभी दो डिस्टिंक्शन किया कि पार्टी क्या रेज करती है और कोर्ट क्या कन्विंस होती है, दो डिफरेंट पॉइंट है। पार्टी ने रेज कर दिया पिटिशन पे, आर्गुमेंट चला और कोर्ट वाकई कन्विंस हुई और नॉट कन्विंस, सेटिस्फाइड नहीं। कोर्ट जब सेटिस्फाइड नहीं है तो एज कोर्ट में चला जाएगा। तो आपका रेज करना एक इनिशियल पॉइंट है, बट उस पे कोर्ट का कन्विंस होना एक अल्टीमेट पॉइंट है फॉर द पर्पस ऑफ रेफरिंग टू द लार्जर। कई बार लोग क्या करते हैं कि हमने क्वेश्चन रेज किया और हमने जो एज्यूम किया कि यहाँ क्वेश्चन इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चला जाना चाहिए। नॉट लाइक, ये सोचना कितना सही है वो आप समझिए। वो तभी सोचा जा सकता है कि जब दोनों पॉइंट को हम मर्ज कर दें। राइट टू फाइल रिट पिटिशन यू हैव, बट राइट टू डिटरमाइन द सेम थिंग, ये कोर्ट का जुरिडिक्शन। अनलेस अनटिल कोर्ट को कन्विंस होना पड़ेगा ना कि आपका फंडामेंटल राइट यहाँ इन्फ्रिंज हो रहा है एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड, नीड टू इन्वोक दिस जुरिडिक्शन, है ना। So that's the part. Once you are writing any petition, तो पिटिशन में हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट करना और एकदम से कॉन्क्रीट और इफेक्टिव और इन्वोकिंग रीजंस सप्लाई करते हैं, इसलिए ये फंडामेंटल और फैक्ट एंड रीजन सप्लाई करते हैं कि यहाँ इन्फ्रिंजमेंट, सो दैट की कोर्ट कन्विंस हो इजिली। और एम्बिग्विटी नहीं क्रिएट करते हैं इसलिए क्योंकि कोर्ट कन्विंस होने के बजाय कंफ्यूज ना हो। आप समझिए, आप कन्विंस करना चाह रहे हैं और आपने सारे फैक्ट नरेट कर दिए, सारे ग्राउंड नरेट कर दिए, और इंटरलिंक और इन्वोकिंग वो नहीं है, कंसाइंस टचिंग नहीं। तो वैसे सिचुएशन में कोर्ट सेटिस्फाई होगी या बहुत सारा कुछ डाल दिया है, तो कोर्ट सेटिस्फाई होने के बजाय यदि उन सारे चीजों से कंफ्यूज कर जाती है, तब कंफ्यूजन की डिग्री किस लेवल पे है वो डिपेंड करता है आर्गुमेंट के दौरान। व्हाई आर्गुमेंट इज रिक्वायर्ड? वंस वी रिटन एवरीथिंग देन, क्योंकि वहां हम क्लेरिफाई करते हैं डाउट्स टू द कोर्ट। यदि वो डाउट्स क्रिएट ही ना हो या मिनिमाइज करें तो कैसे करें? इट इज ऑन द ड्राफ्टिंग इटसेल्फ। What is the synopsis on the drafting? It is the short and argument regarding your case. Isn't it? So the point is this, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप डिफरेंस यहाँ पर मेंशन कीजिए और अपने ब्रेन को कन्विंस कीजिए कि what is the difference between the substantial question of law as interpretation of the constitution, number one, and what is a substantial question of law as of general importance. Which is the mandatory part of Article 133, 1A, that the case involves a substantial question of law of general importance. And what is the substantial question of law, most important? So AoR एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजुअली कि what is the difference between substantial question of law or a substantial question of law of general importance and a substantial question of law as interpretation of the constitution.
वो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि यू आर नाउ कन्विंस। बहुत सारे स्टैट्यूट्स और एक्ट एग्जिस्ट करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं, बट डे टू डे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट, लाइक सीआरपीसी, लाइक आईपीसी, लाइक वन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और टीपीसी इटसेल्फ। बहुत लंबी सीरीज है ऐसे एक्ट की जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर कोई भी एम्बिग्युइटी, क्या वो जनरल इंपॉर्टेंस की एम्बिग्युइटी नहीं है किसी भी प्रोविजन के रिगार्डिंग? और यदि वो है तो दैट इज सर्टेनली अ मैटर ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, बट that is clearly confined to only constitution, then the case is on very different footage. And that is literally and clearly give you the message what is the difference between 32 and 33, 132 and 133, isn't it? So 132 is clearly dedicated for a substantial question of law as interpretation of the constitution. However, 133 is dedicated for a substantial question of law of general importance. And it is a broader because it may include a substantial question of law as the interpretation of the constitution also. Now, मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा और मैं नीचे आऊं और कम टू द आर्टिकल 134. Here is three conditions. An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment. Final order here is not decree, but that is placed with the sentence. Obviously, civil में decree तो होगा नहीं, यहाँ तो sentence होने, because they are talking about, see, an appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of High Court in the territory of India, if, again another condition is there, the High Court, condition A, has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to the death. And the word is written here, or has withdrawal for trial before itself any case from any court subordinate to its authority, and has in such a trial convicted the accused person and sentenced him to death, or certifies under Article 134A that the case is fit to or fit one for appeal to the Supreme Court. और वो कंडीशन नीचे मेंशन है, थोड़ा सा एलोबरेट किया हुआ, provided that an appeal under section clause C shall lie subject to such provision may be made in that behalf under clause 1 of article 145 and to such condition as this. Okay, just leave it, this is not much important in a particular part. But the thing is, what I want to mention here, there are three conditions is there, all are independent, or because of this, or either this or this, or finally this one. It's sufficient to invoke 134. However, in 132 it was and. It was a two condition and that condition was and. This is the difference. Okay. There is and. Now,
मैं जो पॉइंट आउट करना चाह रहा था, एक पैटर्न टू स्टडी, एंड दैट पैटर्न इज व्हाट? दैट पैटर्न इज कि पहले हमने 132 को स्टडी किया और उसको रेफरेंस बनाते हुए 133 एंड 133 के डिफरेंसेस को कैप्चर किया और समझने की कोशिश की। ये जो जनरल इंपॉर्टेंस वाला पार्ट था और सब्सटेंशियल क्वेश्चन वाला पार्ट था, डज इट अवेलेबल इन 134? आंसर इज नो। अब देख लीजिए, these are the three conditions. यहाँ सिर्फ फिटनेस है, fit one for a week. Now 134 क्या है वो हमने देखा. Now I would like to see that very quickly this 134A, जो बहुत important नहीं है but simply है. This is certificate for appeal to the Supreme Court. Every High Court passing or making a judgment, decree, final order or sentence referring to clause 1 of Article 132 or clause 1 of Article 133 or clause 1 of Article 134 may, if it deemed fit so to do on its own motion. This is the procedure. ये सर्टिफिकेट इशू करने का प्रोसीजर है और पावर है. यहाँ पर मैं इसकी बात करूंगा. So now we are talking about this power and now we are talking about the procedure. आप जरा देखिए, every high court ये पावर किसको एम्पावर किया गया है? दैट इज एम्पावर्ड टू द हाई कोर्ट. Passing or making a judgment, decree, final sentence referred in clause 1 of this is the limited condition for the purpose of limited purpose, and that purpose is here. May, and it's a discretionary power. यहां से आप पढ़िए every high court, उसके बाद ये पढ़ा जाइए may, discretionary power, if it deemed fit so to do on its own motion. खुद से हाई कोर्ट अपने आप दे ले. ये 134 प्रोसीजर एंड shall, if an oral application is made, यानी हाई कोर्ट को देना मैंडेटरी होगा. या तो हाई कोर्ट खुद से दे ले या फिर ये मैंडेटरी होगा shall, if an oral application is made or on behalf of any aggrieved party immediately. This is the instance ki kab, immediately after passing or making of such judgment, decree, final order or sentence. A determination determined as soon as maybe after such passing or making the questions whether a certificate of the nature referred to the clause 1 of Article 132 or clause 1 of Article 133 or as the case may be subclause C of clause 1 of Article 134 may be given in respect of the case. So there is सब कुछ वही चीज गोल गोल घूम रहा है. दो कंडीशन स्पेशल है एंड दैट इज, एक में एक पार्टिकल ये एवरी हाई कोर्ट शैल, दैट इज बी, एंड अनदर इज एवरी हाई कोर्ट मे, एंड बोथ के लिए कंडीशन डिफरेंट. मे इज हाई कोर्ट का अपना डोमेन राइट है, पावर है एंड राइट भी दोनों है कि वो जब चाहे इन्वोक कर सकते हैं. एंड डिस्क्रिप्शन भी है. और दूसरा क्या है, मैंडेटरी है कि यदि कोई पार्टी आपको अप्रोच करे तो आप उसको आप डिसाइड. Am I clear up to this point or not? Yes, sir.
Is there any doubt regarding up to this 3 articles? No, sir. यदि किसी को डाउट है तो 5 मिनट पॉज करके यहाँ डिस्कस कर लें. यस मैम, प्लीज. Suppose हमने oral कोई वो लगा दिया, मतलब we are actually when we go to the High Court we just criticize them that this has not, this part I have not agreed with you, so I want to go to Supreme Court. So in that case, Not only agreeableness is there, there are many conditions, ma'am. Keep in mind, there are many conditions. That condition is there substantive? कहाँ पर आप invoke ले जाना चाहते हैं? Is there a general importance question? Is there the constitutional interpretation is required? So ये सारा और narrow down करना पड़ेगा. हाँ, narrow down कर लिया. So उसके बाद क्या High Court अपने order को दोबारा से कर लेगा, and High Court is supposed to really just High Court उस judgment को बिना disturb किए हुए expounded issue करेगा. Okay, clear. Which is a mandatory condition for all the above 3. Right, clear. Okay. और यदि वो तीनों इशू नहीं होता है तब क्या होता है? तब आप अपील में आ ही नहीं सकते. ये तीनों पार्ट को आप इन्वोक नहीं कर सकते ना, तीनों आर्टिकल. Then what you can do? Then you can file an SLP. SLP, yes. So the fourth option is SLP, and SLP is the discretion of this court, Supreme Court. क्योंकि पहले जो discretion to entertain that. Sir. Yes, ma'am. So do we need to say that kindly issue a certificate under Article 134A? Do we need to say before High Court? Yes, of course. And then High Court you have to satisfy to the High Court, not merely statement is there. You may to refer this particular questions. Okay, this issue was decided by the High Court and that is involvement is there. No, in the High Court, if the judgment is not stated, they just say that this petition has been dismissed. So after going through the judgment, then only we will come to know, so what are the points which are not accepted. So that point we cannot raise later on, no? Yes. After fulfilling, for this particular appellate jurisdiction, there are lot of conditions. If the condition is satisfied into the case and this is required, you can say before the court. High Court either may accept or decline. Isn't it? And if it declines, then we go for SLP. No, जब decline होगा तो उसके लिए अगली रेमेडी है. अभी हम एंटर करेंगे, इसीलिए मैंने अभी पॉज करके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ. नहीं, मैं एक बात और है कि आगे क्या होगा, हम आगे की ओर नहीं जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट क्या कर सकता है? आपके एप्लीकेशन को आइदर डिक्लाइन करेगा या एक्सेप्ट. यदि एक्सेप्ट करता है तो आपके लिए वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा और यहाँ आप अपील में आ जाएंगे. उसके बाद यहाँ क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी सर्टिफिकेट की बात हो रही है और ये कंडीशन वहां पर होना चाहिए. कैसे आप सर्टिफिकेट इन्वोक करेंगे? बट ये सर्टिफिकेट का कल्चर टर्मिनेट हो चुका है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन. क्योंकि यदि कोई पर्टिकुलर केस इस तरीके का इन्वॉल्व है तो अदरवाइज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करती इन एनी मैटर, कहीं भी उसको, चाहे वो ट्रांसफर हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, टीपी हो, एसएलपी हो, एनी स्टेज, यदि वो क्लियर है कि ये सर्टेन थिंग्स आर देयर, देन सुप्रीम कोर्ट आर डूइंग देयर ओन और आपको प्रोसीड करती है उस पर्पस पे. मैं दूसरा चीज आपको दिखाना चाहता हूं. उसको दिखाने से पहले लेट मी रीड द आर्टिकल 136. Do I proceed further? Sir, I have one question. Please. Sir, in Article 132, Clause 3, it says, on the ground that such a question has aforesaid has been wrongly decided. Yes. Can it be a case that the case involved such a question but it has not been agitated or considered only? An alternate route I'm asking. So this is a very obvious part, Ajay ji. जब कोई भी क्वेश्चन है, देखो एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं और बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है.
again we are turning towards framing of issues. Sir. यदि आप framing of issues देखेंगे, ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी Sir. ये रेफर करता है कि किसी भी मोमेंट में बिफोर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट इशू रिकास्ट हो सकता है. Sir. दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, सब्जेक्ट टू दिस डिस्क्रिप्शन. जहां भी डिस्क्रिप्शन वर्ड है Sir. वहां पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंटैक्ट, मीनिंग सब्जेक्ट टू रीजनेबल ऑर्डर इज देयर. Sir. ठीक है. अब मान लीजिए सिचुएशन थोड़ा सा और हम यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. आप मान लीजिए कि कुछ इश्यूज आपने रेज ही नहीं किया या किसी Yes. पार्टी ने रेज, Yes, sir. एंड दैट इश्यूज इज रिक्वायर्ड. Yes, sir. कोर्ट को, ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो इस इश्यूज को इंसर्ट कराए. इशू फ्रेमिंग इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, Sir. नॉट पार्टी. और जिस मोमेंट पे कोर्ट रियलाइज कर ले कि सर्टेन इश्यूज इज मिसिंग या सर्टेन इश्यूज इज एडिशनल या फिर जो जिसकी जरूरत नहीं है, दे अकॉर्डिंगली चेंज द सिचुएशन. Yes, sir. समझे? Right. तो आपका क्वेश्चन पर हम आते हैं डायरेक्टली कि यदि सर्टेन इश्यूज डिसाइड उन्हें मतलब कंसीडर ही नहीं हुआ, रेज ही नहीं हुआ, Yes, sir. तो जब कंसीडर्ड नहीं होना, which is required consideration, itself are wrongly decided. Sir. है ना? कि जो चीज मैंडेटरी पार्ट है, मतलब ये है कि एक बॉडी के अंदर हार्ट, लंग, ब्रेन सब कुछ होना चाहिए और कोई एक पार्ट नहीं है. होना और खराब होना अलग बात है और नहीं होना अलग बात है. Right, sir. है ना? तो वो मैंडेटरी पार्ट है और वो होना चाहिए था और वो नहीं है. दैट इज ऑफ कोर्स सर्टेनली दिस इज द क्वेश्चन टू गेट दिस सर्टिफिकेट. Sir. ठीक है, क्लियर है? Yes, Sir, sir. I have doubt, sir, please. हाँ प्लीज भरत जी. अरे Sir. आपका इंतजार हम बड़े दिनों से कर रहे हैं, उसको बोलिए आप. Sir, suppose हाई कोर्ट उसको ऑर्डर को रिजर्व कर दिया सर, एंड उसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व है, क्या उस कंडीशन में 134 ए सब क्लास बी के अंदर ओरल एप्लीकेशन को मेट होगी नहीं सर? सॉरी, सपोज कोई इशू क्वेश्चन ऑफ इन्वॉल्व था किसी मैटर में, एंड हाई कोर्ट उस मैटर को रिजर्व कर दिया सर आर्गुमेंट के बाद. अगर कोर्ट में देन एंड देयर प्रोनाउंस होता है कि ठीक है डिसमिस चाहे जो भी हो, तो वी कैन प्रे फॉर ओरल एप्लीकेशन अंडर 134 ए सब क्लास बी. लेकिन जब फाइनल ऑर्डर रिजर्व के बाद आया सर, कुछ दिन बाद आया, तो फिर उस केस में हमें इन्वोक करना होगा, तो क्या करना चाहिए सर? क्या हमें एमएफआई करना होगा? एट दैट 134 मैंने सर्टिफिकेट, सीधा वर्ड में सर्टिफिकेट बोलूं तो ज्यादा अच्छा है. सर्टिफिकेट की बात तब करते हैं ना, जब उस समय करते हैं जब जजमेंट प्रोनाउंस हो चुका है. अभी देखिए ना 134 में फिर से मैं रीड आउट कर देता हूँ आपको. ये देखिए, if an oral application is made by on behalf of the party aggrieved immediately after Yes, sir. the passing or making of such judgment, decree or final order. समझे? तो आपका जो पॉइंट है, जब रिजर्व कर लिया तब तो पास नहीं हुआ ना, वो मोमेंट अभी आया नहीं ना. इमीडिएटली आफ्टर, जब वो जजमेंट पास हो जाएगा. ये वर्ड क्यों आया है कॉन्स्टिट्यूशन में? द रीजन इज दिस, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इज दिस. जब जजमेंट आ जाएगा, देखिए कोई भी इश्यूज है उस पर आर्गुमेंट नहीं हुआ मान लीजिए, Sir. और कोर्ट क्या करती है कि आफ्टर रिजर्व करने के बाद एक इशू नया क्रिएट करके और उसके आंसर को इनकॉर्पोरेट कर देती है. क्या जरूरत है दोनों पार्टी को वहां पर आने? जो नेसेसरी पार्ट था वो जब इम्पोज हो गया, कोर्ट ने रियलाइज किया तब जब वो रिजर्व कर ली. आफ्टर फाइल रीडिंग दे रियलाइज कि सर्टेन पॉइंट इज मोर देयर, तो वो अकॉर्डिंगली वहां पर वो आंसर करते हुए निकलती. तो उसकी जरूरत कहां पड़ती है आपको? अल्टीमेटली आपको कोर्ट को कन्विंस ही करना है ना. ये अलग बात है कि कोर्ट उतना सेंसिबली वर्क करे, एंड इट इज एजम्प्टेड, मतलब एक्सपेक्टेड फ्रॉम कोर्ट की कोर्ट विल वर्क अकॉर्डिंग. आपके एक्सपेक्टेशन पे कितना
आउटपुट निकलता है केस टू केस बेसिस, वो अलग पार्ट, और वो सब्जेक्ट टू एग्रीवनेस होता है. सो आउटकम आने तक वी नीड टू वेट. ठीक है ना? एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, मैं थोड़ा प्रोसीड करूं, अभी टाइम थोड़ा जा रहा है, मेरी सांसें रुक रही है क्योंकि मुझे जितना पूरा करना था वो होना चाहिए. डू आई प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. Yes, please. Yes, sir. now I would like to enter into 135. मैं रीड आउट नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन थिंग, बट अनलेस मैं फिर से रीड ही कर लेता हूँ. चलो. Until Parliament by law or otherwise provided, the Supreme Court shall also have the jurisdiction and power with respect to any matter to which the provision of Article 133 or 134 do not apply, if jurisdiction and power in relation to that matter were exercisable by federal court immediately before the commencement of this constitution under any existing law. ये उस समय की बात करता है जब सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन फुल प्लेस इंप्लीमेंटेड, एंड आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट अंडर एक्जिस्टेंस, है ना? उसके पहले क्या स्ट्रक्चर? एक फेडरल कोर्ट हुआ करता था जो सुप्रीम बॉडी था, हाई कोर्ट के एबव था, वो फेडरल कोर्ट था इंडिया. और उस मतलब सुप्रीम कोर्ट के एवब, मतलब इंडिया में हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, उसके बाद फेडरल कोर्ट था. अब हमने जब सुप्रीम कोर्ट बनाया और इसी को फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ फाइनल रिजॉर्ट ऑफ लिटिगेशन बनाया, तब वो वाला पावर भी यहाँ वेस्ट कर दिया, विच इज सेइंग 135. मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करूंगा. मेरा कंसर्न पार्ट है दिस 136. See, notwithstanding anything in this chapter, इसका सीधा मतलब प्लेन लैंग्वेज में है कि this article is having overriding effect over all the power of this chapter, and consequently this is also the alternative jurisdiction. अल्टरनेटिव जुरिडिक्शन में जब भी बोलूं, उसका मतलब यहाँ पर मेरे मन में ये होता है कि मैं ये एक्सप्लेन करूं कि इसके अलावा यदि कोई भी जुरिडिक्शन हो तो वो भी इन्वोक किया जा सकता है और ये भी इन्वोक किया जा सकता है. Anyone can invoke either this or that. But anyway, this article, once we are talking notwithstanding, जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और रीड करते हैं, notwithstanding anything, where this is not a complete phrase, उसके बाद कुछ होना चाहिए डॉट 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 in this chapter or in particular article or in particular part or in particular statutes or anywhere. कुछ ना कुछ तो रेफर होना चाहिए ना. यदि ये नहीं हो तो ये फ्रेज ही कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट फ्रेज हो जाएगा ना. तो हमेशा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर यहाँ लिखा हुआ है. इट माइट बी पॉसिबल कि इन पर्टिकुलर आर्टिकल 137 लिख दे, या ये भी पॉसिबल हो कि कहीं और लिख दे. तो बट द थिंग इज दिस कि जहां कहीं भी ये मैप कर रहा है उसके ऊपर ये प्रीमेसी रखता है, इसकी वैल्यू सबसे ऊपर. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, So sir. this article की जो प्रीमेसी है, जहां भी not with standing है, वो बाकी कंसर्न पार्टिकल के ऊपर इसकी प्रीमेसी अपर फुटेज. So इसको इसलिए भी यूज किया जाता है कि कंफ्लिक्टिंग पार्ट जब वो दो पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ में, तो उसमें कौन सा प्रिविल करेगा.
कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, दिस इज आर्टिकल 136 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम के लिए, इसलिए इसको सबसे पहले समझना और याद करना जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर एक्सपेंड करूंगा और उसके बाद जस्ट कहाँ नहीं किया जा सकता वो दूसरी बाउंड्री है वो यहाँ पर। मैं वापस इसको फिर से रीड आउट करता हूँ। सबसे पहला पावरफुल चीज है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, दिस इज ओवरराइडिंग इफेक्ट on all articles available in this particular chapter, which is Union Judiciary. Now, the Supreme Court may. So, what is the meaning of this may? Discretionary jurisdiction. In वो क्लेरिफाई किया हुआ था, इन इट्स डिस्क्रिशन। क्या फिर से मैं रीड करूं? द सुप्रीम कोर्ट में ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील। So what is this meaning, this grant special leave to appeal? ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, स्टैट्यूटरीली आपको ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, बट दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। आप सिर्फ ये कह रहे हो कि मेरा ये जो पिटिशन है इसको अपील बना दो। रिक्वेस्ट टू ट्रांसलेट इनटू अपील, दिस इज नॉट एन अपील। तो एसएलपी अपील नहीं है और ना ही आपका ये अलग राइट है, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है और पावर है और जुरिडिक्शन है कि कोर्ट आपके इस पिटिशन को अपील में कन्वर्ट कर दे। और सेट जुरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि जब तक अपील कैपेसिटी में नहीं बैठेंगे तब तक आप इम्पुंग जजमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यदि इम्पुंग्ड ऑर्डर के किसी भी क्लाउज को मॉडिफाई करना हो, चेंज करना हो, सेट असाइड करना हो, इन एनी मैनर यदि उसको डिस्टर्ब करना हो तो निश्चित रूप से अपील का होना जरूरी है और एपलेट कैपेसिटी में ही ये किया जा सकता है एंड नॉट अदरवाइज। हाँ, आप एडिशनल कमेंट कुछ दे सकते हैं which is not confined to the impugned order. Am I clear up to this point or not? So उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोर्ट को ये जरूरी है कि उसको अपील में कन्वर्ट करे। एक ये मतलब जो जुरिडिक्शन है नहीं उस जुरिडिक्शन में ट्रांसलेट कर दे इसको। ये स्पेशल पावर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। Certain jurisdiction is being created for a particular purpose. Now, again, I'm coming back to this particular part, grant special leave to appeal. अब जरा ध्यान से देखिए, फिर से अब देखिए, पहला पॉइंट अप्रेज है यहाँ, notwithstanding anything in this chapter, comma, the Supreme Court may in its discretion grant special leave to appeal. ये दूसरा पार्ट। एंड तीसरा पार्ट फ्रॉम, और इस फ्रॉम के बाद 3 वर्ड यूज किया गया है, दैट इज द एनी। फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर। इन एनी, दूसरा एनी, काउज और मैटर पास्ट और डिटरमाइंड, पास्ट और मेड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जरा फिर से मैं इसको रीड करूं और मैं थोड़ा आपको हाईलाइट करूं सर्टेन थिंग, और वो हाईलाइट करना चाहता हूं मैं। पहले दिस वर्ड फ्रॉम एनी, इन एनी, और दूसरा बाय एनी। ये तीनों क्या है? 3 लोक कहा जाता है, 3 डायमेंशन होता है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए।
धरती, आकाश और पाताल, एंशिएंटली ये कहा गया है, धरती, आकाश और पाताल ये 3 लोक है और तीनों लोक की अलग अलग एक्टिविटी चलती है। पहला लोक मतलब 3 डायमेंशन की बात करें तो वो 3 डायमेंशन ये है कि फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस एंड ऑर्डर, कोई भी कोर्ट यदि कोई चीज पास करेगा, ऑर्डर पास करेगा, तो उस ऑर्डर का जो नेचर है वो नेचर कैसा कैसा हो सकता है। या तो वो जजमेंट होगा, या डिक्री होगा, या डिटर्मिनेशन होगा, या सेंटेंस होगा, या ऑर्डर होगा। इसके अलावा कुछ और होगा? The answer is no. यही 5 चीज तो होता ही, छठा चीज तो होता ही नहीं। इनफैक्ट यही वो पंच तत्व है जिसमें पूरा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। पूरा इंटायर जुडिशियल वर्ल्ड इसी पांचों चीज में समा जाता है। मतलब इंसान के बारे में कहा जाता है ये पंच तत्व से बना हुआ चीज है और अंत में पंच तत्व में मिल जाना है। यही है वो पंच तत्व जुडिशियल वर्ल्ड का। ये एक डायमेंशन, दैट इज एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस एंड ऑर्डर। और यहाँ देखिए द वर्ड लगा हुआ है वो है एनी, ये वर्ड एनी है। मतलब ये कि इसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं है। कोई भी जजमेंट, कोई भी डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस एंड ऑर्डर। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा इसका स्कोप है। जस्ट रियलाइज इट। सर यहाँ ऑर्डर का मतलब कोई भी ऑर्डर, मतलब ऑर्डर कोई भी ऑर्डर शीट है, इंटरमीडिएरी ऑर्डर शीट जो होती है, या फाइनल ऑर्डर है? एनीथिंग। यहाँ फाइनल ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ फाइनल ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है। सो बी केयरफुल। एंड आपका बिल्कुल सही पॉइंट है। एनी ऑर्डर, इवन इंटरिम ऑर्डर, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग जब चलती है तो कुछ ना कुछ तो लिखाता है ना, इवन एडजॉर्न लिखाता है ना। एवरीथिंग इज द ऑर्डर। बिना ऑर्डर के कोई प्रोसीडिंग कंप्लीट ही नहीं होती, अधूरा प्रोसीडिंग्स हो, इजंट इट? लेकिन सर एसएलपी में हम लोग आते हैं फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट ही आते हैं, बीच के ऑर्डर के अगेंस्ट बहुत कम आते हैं। सर मैं आपको अभी अभी साबित करूंगा, अभी अभी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि किसी भी इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ आ जाते हैं यहाँ। सर मैं आपको फ्रीक्वेंसी बताऊंगा कि हाई फ्रीक्वेंसी में मैंने यहाँ आकर के रिलीफ लिया हुआ है इंटरिम ऑर्डर, एंड इट वाजंट मैंडेटरी। पहले मैं इस आर्टिकल को देखूं और आगे का भी थोड़ा बाद में सोचिएगा, पहले थोड़ा भी यहाँ फोकस कर लेते हैं। तो फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस एंड ऑर्डर, दिस इज वन वर्ल्ड। अनदर वर्ल्ड इन एनी काउज मैटर पास्ट और मेड। दूसरा दुनिया देखिए, इन एनी काउज और मैटर, मतलब ये भी नहीं है कि पहले आपने देखा ना सिविल, क्रिमिनल एंड अदर प्रोसीडिंग, है ना। यहाँ ऐसा कुछ लिमिटेशन है? In anywhere, writ proceedings, this proceeding or that proceeding, anything, in any cause or matter passed or made. तो यहाँ भी वर्ड any है और यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगा। तो दिस इज अनदर अनलिमिटेड वर्ल्ड। दिस इज, पहला था ना ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा महेश, उसी में पूरा दुनिया समा जाना है। एंड दैट इज आर्टिकल 136, जिसके अंदर पूरा चैप्टर यूनियन जुडिशरी समाया हुआ। एंड तीसरा है by any court or tribunal in the territory of India। कोई भी कोर्ट होगा। पहले क्या था? हाई कोर्ट था सिर्फ, याद आ रहा है? आर्टिकल 132, 133, there is the any tribunal and high court or court, the word is written there, any court or tribunal in the territory of India। फिर से मैं रिकंसाइल करता हूं ये तीनों वर्ल्ड को पंच तत्व के साथ।
ये जो है ना, इन एनी मैटर और इन बाय एनी कोर्ट एंड ऑर्डर, ये जो है ना, ये स्वर्गलोक है, सारे देव ऊपर ही बैठे रहते हैं, वहां से आता हुआ। इन एनी टाइप ऑफ मैटर, जो भी काउस हो, मैटर हो, जो भी बचा हो, नथिंग लेफ्ट इनटू दैट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड एनी एंड बिकॉज ऑफ विदाउट एनी लिमिटेशन। सो ये इनफाइनाइट वर्ल्ड जो हम कह रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज में आ जाए। Notwithstanding anything in this chapter, the Supreme Court may, in its discretion, grant a special leave to office. This is one part, या two part of can, as per your convenience. Third is from any judgment, decree, determination, sentence, or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India. So, इस पूरे आर्टिकल का जो सेकंड पार्ट है, यहां से लेकर के यहां तक का, उसको समझने के लिए और याद करने के लिए 3 फ्रेज वर्ड आप याद कर लीजिए जो हाईलाइटेड है आपके स्क्रीन पे। फ्रॉम एनी, इन एनी, बाय। ग्रेट सर, ग्रेट। और फिल इन द ब्लैंक कर लीजिए। The things are done. So from any judgment, decree, determination, sentence and order, पंच तत्व यहाँ हो गया। In any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India. Do you have any confusion in clause 1? No, sir. Are you feeling comfortable to understand this particular article? very very बहुत अच्छे से याद ही हो गया। So we are able to reproduce it before the examination. क्या आप लोग रट लेंगे इसको या फिर मुझे और रटाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं रट गया। बट एक कंडीशन है और वो कंडीशन है क्लाउज 2। वो लिमिटेशन है ऑन दिस पर्टिकुलर 130 आर्म्ड ऑफिसर्स के लिए। और जब तक आप ये पूरा का पूरा लिख दें यहाँ से यहाँ तक, ये इनकम्प्लीट होगा जब तक आप इस पार्ट को नहीं करते, क्योंकि आर्मी के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होता। 136 आर्मी से आने वाला जो केसेस है आर्मी रिलेटेड, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है और वो एग्जम्प्टेड है। वो इस आर्टिकल क्लाउज 2 को आप पढ़ें तो समझ में आएगा। नथिंग इन क्लाउज 1 शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर। यहाँ पर 4 है, या ये याद रखिएगा, डिक्री नहीं है क्योंकि आर्मी में सिविल मैटर नहीं होता है। पास्ट और मेड by any court or tribunal constituted by or under any law relating to the armed forces. This is the only exception is there. So जब आप ये पूरा लिख देंगे और इसको ना लिखें तो निश्चित रूप से वो ये चीज उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। अब एक डिमार्केशन तो देंगे कि ये यहाँ अप्लाई नहीं। Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है। So I guess कि अपील के ये जो चारों आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिखे थे, थोड़ा सा मैं यहाँ आ जाऊँ। It was the SLP. It was appeal under article 132, 133, 134, है ना? अब आप जरा ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर 1 सेक्शन, क्या हमने सोर्स रियलाइज किया? क्या हमने पावर ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी आइदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और लिटिगेंट और पार्टी हमने रियलाइज किया? इज देयर अ जुरिडिक्शन which is sourced by the constitution itself? Is there any conditions? Yes, depends किसकी राइट है, but certain procedure हमने देखा, but finally we will proceed from right to remedy आगे जब हम रूल्स में एंटर करेंगे। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आप जरा देखिए, अभी हमने देखा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एपलेट जुरिडिक्शन। क्यों
क्यों हम 136 को एक्स्ट्राऑर्डिनरी करें? ये नॉर्मल कोर्स में अलाउड नहीं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, है ना? और आप ये अपील भी नहीं, आप अपील के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। इसका 2 कंडीशन होता है, आप लीव अप्लाई करेंगे या तो लीव ग्रांट हो जाएगा, है ना? ये सर्टेन डायरेक्शन के साथ आप विड्रॉ कर लेते, जो कुछ करते, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये कोर्ट के सामने एवरीवन इज वाचिंग एवरी डे। सो मेरा कहने का मतलब है, कोर्ट डिस्क्रिप्शन जब अलाउ कर देती है, मतलब फाइनली जब जजमेंट आता है तो उसके ऊपर एक वर्ड लिखा होता है, लीव ग्रांटेड, जजमेंट सेट असाइड, रिमांड बैक, sort of things. This is the important part what we discussed. Even SLP हमने डिस्कस किया, 136, 132, 133, 134 हमने डिस्कस। We never ever right now अभी डिस्कस किया, this is the statutory appeal and disappeal. Before entering into them, I would like to spend some time on the particular part which is called Supreme Court. आधा घंटा मैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स में एंटर करना चाहूँ, यदि आप लोग अलाउ करें तो। ठीक सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? नो। हाँ, एक चीज और मैं बतला दूं, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट पीपीटी अवेलेबल है, जो विवादत मखीजा सीनियर एडवोकेट इन्होंने प्रोवाइड कराया था ड्यूरिंग लेक्चर। उनका पहला स्लाइड ही इनके ऊपर है 136 पे। बहुत ब्यूटीफुली वर्ड्स में उन्होंने 2 पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में 136 लिखा है और दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने लिमिटेशन लिखा है। यू मे वॉच इट और यू मे डाउनलोड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्ट। सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पे AoR सेक्शन में वो अवेलेबल है। एक लिंक डेडिकेटेड है फॉर द AoR एग्जामिनेशन, वहां पे वो मिल जाएगा आपको। अब थोड़ा सा फर्दर प्रोसीड करते हैं और इस पर्टिकुलर आर्टिकल को थोड़ी देर के लिए मैं क्लोज कर रहा हूं। दिस इज द सुप्रीम कोर्ट रूल्स। सबसे पहले मैं लैंड अप करता हूं 136, ऑर्डर 21। मैंने राउंड भी किया था लास्ट डिस्कशन में कि 21 इज द इम्पोर्टेंट, और क्योंकि इसको मैंने रेफरेंस बनाना है और इसी से कंपेयर करना है बाकी सारे ऑर्डर का। ठीक है, ये ऑर्डर क्या कहता है, इसके कुछ आर्टिकल्स को मैं रीड करूंगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, एंड आई गेस कि आप लोग आराम से समझेंगे इसको। अब देखिए, वेयर यहाँ पे कुल मिलाकर के आप जरा देखिए, एक चीज और मैं नोट करा दूं, जब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्डर 21 की, तो ऑर्डर 21 में कुल मिलाकर के 15 रूल है। आपको मैं दिखाऊं कि वो 15 रूल हैं कहां। दिस इज 1, आप यहां देख रहे हैं, यहां पर 1 है लिखा हुआ। दिस इज 2, आप जरा सिर्फ लास्ट तक मैं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि इसको रेफरेंस हम ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने रूल। तो देयर आर 15 रूल्स, है ना? लास्ट में यहाँ 15 दिख रहा है। देयर आर 15 रूल्स। आई वुड लाइक टू रीड रूल 1 and 2 especially. What is this rule 1? Where certificate of fitness to appeal to the court was refused in a case by High Court. A petition for SLP to the court shall
be lost in the court within 60 days from the date of order of refusal, and in other case within 90 days from the date of judgment or order sought to be appealable from, provided that from an application for leave to appeal to the High Court from the judgment of a single judge of that court has been met and refused, in computing the period of limitation in the case under this rule, the period from making of that application and rejection thereof shall also be excluded. हमने पूरा रूल पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन पे मैं नहीं जाना चाहता, बट फिर भी मैं रीड आउट कर लूं. For the purpose of this rule, the expression final order of refusal means the order refusing to grant the certificate under Article 134A of the Constitution, being a certificate of the nature referred in the Article 132 or Article 133 of the Constitution on merits, and shall not include an order rejecting the application on the ground of limitation or on ground of such an application is not maintainable. लिमिटेशन के ग्राउंड पे तो पहला वर्ड यहाँ यूज होता है was refused, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस was refused. इसका अपोजिट पार्ट क्या है? once accepted, है ना, या कुछ और होगा? So for the purpose of once accepted, these would fall under appeal. So उसके लिए आर्टिकल 19 and 20 हो जाएगा. If the matter is civil, it will go to the order 19, and if the matter is criminal nature, it will go to the order 20. लेकिन जब रिफ्यूज हो जाए सर्टिफिकेट, अभी हमने देखा, रिफ्यूजल के लिए we will come to the SLP, और रिफ्यूजल के लिए यहाँ पर क्या है ये? This is saying about the limitation. मैं यदि कुल मिलाकर के ये कहूँ, हमने ये पूरा रूल 1 रीड आउट किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक. What was the moral of the story? ये किस लिए था? What is talking about? The underlying principle is what? The underlying principle is talking about the limitation. And there are two kinds of limitations. One is limitation for 90 days, another is limitation for 60 days. So limitation for 90 days, जहाँ पे सर्टिफिकेट की बात ही नहीं, और जहाँ सर्टिफिकेट है और रिफ्यूजल है, तो सर्टिफिकेट अप्लाई करने में, रिफ्यूजल डेट आने में, इसके बीच का जो टाइम होगा वो टाइम भी बाहर हो जाएगा. उसके लिए सर्टिफिकेट रिफ्यूजल के बाद लिमिटेशन पीरियड इज 60 days only. So the limitation period for the SLP is coming by way of certificate and refusal, that is यहाँ पर लिखा हुआ है be lost within 60 days from the date of order of refusal, and in any other case within 90 days from the date of judgment and order. Clear? Yeah, any doubt? Yes, sir. मैं सिंपल से एक लाइन में कहूंगा, रूल 1 is talking about limitation period for SLP, which falls in two categories. One is certificate of fitness refusal order. एक्सेप्टेंस तो यहाँ आना ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी चला जाना है 19-20 में. एंड अनदर इज हम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई ही नहीं किया, सीधा ऑर्डर लिया एसएलपी के लिए. बट दैट पर्पस द लिमिटेशन पीरियड इज 90 days. अब आप बताइए, सर्टिफिकेट के लिए आप जाना चाहेंगे? No, sir. No, sir. Not at all. So this is the reason कि certificate is not utilized. And it's rare now.
यूजुअली तो लोग जाते नहीं होंगे ना सर्टिफिकेट के लिए, व्हाई शुड दे वेस्ट टाइम? बहुत कम सर्टिफिकेट वाला केस फर्स्ट डिकेड में था 60 70 से के बाद एकदम से टर्मिनेटेड। अगर क्लाइंट से फीस लेनी है तो सीधे ही फिर क्यों उसको बोले नहीं, सर्टिफिकेट? वो मिसलीड करना और क्लाइंट से फीस लेना, दिस इज द एक्सटॉर्शन मैम। नहीं, एक चीज तो है ना, तो कोई दिमाग दिक्कत नहीं है, वो में उसके लिए तो स्काई इज द लिमिट। But my point is this is the limitation and this is provided into the rules which is framed under Article 145 1, isn't it? जो हमने elaborately देखा है। अब आगे देखते हैं, रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मैं उसकी बात करूंगा आगे। Rule 2 is talking about where the period of limitation is claimed from the date of refusal of certificate under this। इसमें भी मैं नहीं एंटर करता, रूल 2 को भी नहीं एंटर करता, मैं आगे बढ़ता हूँ। रूल 3, दिस इज अगेन कंसर्न टू द लिमिटेशन। रूल 1 एंड रूल 2 इज द लिमिटेशन। आप लोग पढ़ लीजिएगा, दैट इज फॉर यू, नॉट फॉर मी टू एक्सप्लेन इट। मैं डिटेल्डली रूल 3 में जाना चाहूंगा। आप जरा नोट कीजिए, मैं आपको जरा एक टेबल यदि बना करके मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, बट Sir, it does not talk about Article 134, only 32 and 33. हाँ, मैंने जहां भी सर्टिफिकेट की बात, सर्टिफिकेट इफ 34 में भी हम आते हैं और यदि सर्टिफिकेट वाला केस अराइज होता है तब की बात कही जाए। Sir, अजय जी 134 आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, पूरा टाइम उनको दीजिए, मैं डायग्राम बनाऊंगा, बहुत कम समय में बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। ये डायग्राम मैंने अभी अभी एक रेड कलर में बनाया और आपके साथ में शेयर। ओके, ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा मैं क्या करूं बताइए। पर उसको सामने से दिखा दीजिए। अरे वो नहीं देख रहा है ना बैकग्राउंड में। You can share it on the group. रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हम कुछ तो करेंगे, अभी छोड़ेंगे थोड़ी ना उसको, बगैर कैसे मजा नहीं आएगा। सिर्फ फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिए, इसे ग्रुप में व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। अब आएगा, अब आएगा, व्हाट्सएप पे शेयर करने की जरूरत नहीं। ओके, थोड़ा सा और मैं करूँ। सर नहीं दिख रहा है ग्रुप में। नहीं क्लियर हुआ। दिखेगा दिखेगा, अभी दिखेगा ना, ये आपको दिखेगा, अभी तुरंत दिखेगा। ब्लर से लग रहा है। तो दरअसल हमने अपने इस पे बैकग्राउंड कुछ अलग चीज सेट कर रखा है ना, तो सर मेरे ख्याल फोटो खींच के शेयर करना ही बेस्ट रहेगा। मैं करता हूँ 2 मिनट मुझे आप टाइम दे दीजिए ना प्लीज, इसी बहाने मेरे लिए ब्रेक हो जाएगा थोड़ा। यस सर। है ना, चलिए ये तो हो गया, अभी इसको रहने देते हैं, मैं आपको भेजता हूँ। दरअसल यहीं पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ व्हाइट बोर्ड यदि होता तो मैं उसको यूज कर लेता, बट यस दिस इज देयर व्हाइट बोर्ड, बट मुझे यूज करना नहीं आता, इट वुड बी वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं यहाँ स्क्रीन पे ही आपको बता, आप जरा देखिए, आप अपने कॉपी पे थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, आपसे ही बनवा लेता हूँ। थोड़ा सा देखिए इस रूल 3 को, मैं थोड़ा हाईलाइट यूज कर रहा हूँ, हाईलाइटर यहाँ पे। आप रूल 3 को देखिए, रूल 3 का ये 1 है, दिख रहा है।
Rule 3.1, I am talking about Order 21, Rule 3 only. ये Rule 3 बहुत बड़ा है. It is started from here. और यदि मैं और नीचे जाऊं तो Rule 3 आपको यहाँ तक आता है. Up to this particular place is Rule 3. यहाँ तक Rule 3. इस 5 वाले पार्ट तक. So Rule 3 especially divided into the 5 parts: Sub Rule 1, Sub Rule 2, Sub Rule 3, Sub Rule 4 and Sub Rule 5. आप एक डायग्राम बनाइए, आपको पता चलेगा कि रूल 3 को 5 सब रूल में डिवाइड किया हुआ है. 1, 2, 3, 4, 5 और सारे सब रूल अंडर ब्रैकेट. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. जी सर. अब आप देखिए, आप थोड़ा सा और एंटर करते हैं. ये 5 पार्ट में बट गया. अब मैं सिर्फ एक की बात करूंगा, रूल 1 की बात करूंगा. ये रूल अपने आप में, बाकी सारे रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके अंदर नहीं है. 3, 4 and 5 आइसोलेटेड एंड क्लियर है. रूल 1 is again divided into A to G. A, B, C, D, E, F, G. This is the one. A, B, C, D, E, F and G. क्लियर है? यस सर. सिर्फ 1 and 2, 3, 4 and 5 वो वहीं रुकेगा. अब फिर से वापस मैं 2 जगह और मैं एंटर करूंगा, 2-3 जगहों पे, और वो है आपका D and F. अब जो A से लेकर कितना है उसमें एक पॉइंट D पे है, दूसरे पे पहले एक एक्सपेंड हुआ था, आपसे 2 एक्सपेंड होगा. D की बात करें तो D is again divided into the 1, 2 and 3. बिल्कुल 1, 2, 3 स्टार्ट टाइप से. और जब G की बात करें, सॉरी F की बात करें, नॉट G, F की बात करें तो F is again divided into 1, 2, 3, 4 and 5. 3 and 5 है. क्लियर है? यस सर. आई गेस कि एक प्यारा सा ट्री आपके पेज पे डेवलप हो गया होगा. ये स्ट्रक्चर है और यही है रूल 3. और इसी रूल 3 में आप जरा ध्यान से देखिए. अब मैं आपको एक एक कंटेंट के बारे में बताऊंगा. ये रूल 3 को मैं फोकस कर रहा हूँ. The petition for seeking a special leave to appeal filed before this court under Article 136 of the Constitution India shall be in Form 28 appended in the rules. कौन सा पार्ट कहता है? This is Rule 3A, है ना? No separate application, other part says no separate application for interim relief need be filed. Interim prayer, if any, should be incorporated in Form 28. तो Form 28 में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पिटिशन के अंदर क्या होना चाहिए, वो अभी यहाँ से शुरू हुआ. अभी आपको पहला लिमिटेशन था. एंड दैट्स व्हाट आई सेड कि वी विल डिस्कस दिस प्रोसीजर, रेमेडी एंड प्रोसीजर लेटर. मैं वापस इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ऑर्डर पे आ रहा हूँ. जरा ध्यान से सुनिए. इसमें बहुत सारा कुछ है ना, तो इनकॉर्पोरेट करने की चीज नहीं है. बट यू नीड टू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर ए. उसको 3-4 बार आप राउंड कर लीजिए, घुमा लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए.
because this is 3(1)(a) is important. मैं फिर से इस पेज नंबर 13 पे आऊंगा, मैं थोड़ा और नीचे जाऊंगा, आपको फॉर्म 28 दिखाऊं. आप जरा देखिए यहाँ पर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा रूल लिखा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑर्डर 21 रूल 3(1)(a). है कि नहीं? सिंक्रोनाइज है ना ये. 136 then order 21 then form 28. now मैं वापस वहां नहीं जा रहा, और यहीं पर ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है. para 6 interim relief, para 8 interim prayer. Does this not synchronize with rule 3(1)(a)? Yes, sir. तो यही कहते हैं. So the form is also the extension of that particular rules. वापस मैं 13 पेज 13 पे मेरे इस पे जो पेज 13 है वो ये है. Now आगे पर ये B क्या कहता है. So वो A was the important. मैं बहुत ज्यादा अब इसमें नहीं जाऊंगा, अब रफली मैं रीड आउट करता हूं. Along with the petition, list of date in chronological order with relevant material fact or event pertaining to each of the dates shall be furnished. तो ये क्या कहता है, फॉर्म 28 के अलावा, यानी along with the petition. So the petition means form 28. Am I clear or not? Yes, sir. Is there any doubt? No, sir. And form 28 शुरू से अंत तक होगा. Now along with the petition and along with the form 28 एक लिस्ट ऑफ डेट होगा, और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में विथ मटेरियल रिलेवेंट मटेरियल फैक्ट्स और इवेंट्स पर्टेनिंग टू ईच ऑफ द डेट्स शैल बी फर्निश्ड. किस डेट को क्या हुआ. सी कहता है एसएलपी शैल बी कन्फाइंड ओनली to the pleadings before the court or tribunals whose order is challenged. However, the petitioner may, with due notice to the respondent and with the leave of the court, urge additional grounds at the time of hearing. इसके लिए दो प्रोसीजर है. One is the due notice to the respondent. यदि कोई आप एडिशनल ग्राउंड ले रहे हैं तो वो पहला कंडीशन ये है कि रिस्पोंडेंट को आप प्रोवाइड कराएं, और दूसरा कंडीशन ये है कि आप कोर्ट का परमिशन ले. कोर्ट का ये डिस्क्रिप्शन है विथ लीव ऑफ द कोर्ट. आप एडिशनल ग्राउंड अर्ज कर सकते. क्लियर है? Yes, और sir. एनी डाउट? मीन्स जब हम एसएलपी फाइल करेंगे उसके बाद हम उसमें अगर कोई पॉइंट डालते हैं विच इज नॉट इन द नॉलेज ऑफ द रेस्पोंडेंट, at the time of admission itself we have to say that these points are additional, so we won't. कहाँ लिखा है at the time of admission? नहीं, आप ये कह रहे हैं ड्यूरिंग हियरिंग. वो कह रहा है कि ड्यूरिंग हियरिंग. हाँ, ड्यूरिंग हियरिंग्स. तो ड्यूरिंग हियरिंग कहाँ लिखा है कि एडमिशन स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे? No, we need not to mention in our SLP itself that these are the points like which are additional or something. नहीं, वो तो एडिशनल डॉक्यूमेंट के आगे अलग प्रोविजन है. अभी मैंने पूरा रूल कहाँ पढ़ा ना. ठीक ठीक. अब मैं छोड़ूंगा आपके लिए क्योंकि टाइम इज गोइंग ऑन. नहीं आप क्वेश्चन इज दिस कि SLP shall be confined only. Shall be, the word written, the shall be confined only to the pleadings before the court. वो आप कन्फाइन कर लीजिए, लेकिन उसके अलावा यदि कोई नया फैक्ट है तो वो फॉर द सेक ऑफ फेयरनेस वो तरीके से आपको
ये दो कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, बट दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल केस, बट यूजुअली व्हाट वी आर अलाउड टू कन्फाइन टू द प्लीडिंग, इट इज रूल 3(1)(c). अब मैं थोड़ा और क्विकली पास करूं तो मैं ये डी पे आऊं, व्हिच इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट एंड व्हाट इट सेज। देखिए, द पिटिशनर में प्रोड्यूस कॉपी ऑफ सच पिटिशन डॉक्यूमेंट्स which are part of the record in the case before the court or tribunals below, if and to the extent necessary to the answer the question of law arising for consideration in the petition, or to make out the grounds urged in the SLP as annexes to the petitioner, numbering as annexer 1, 2, 3 and so on. क्या मार्क करना है वो भी आपको पता है, annexer 1, annexer 2, annexer 3 for petitioner P1, P2, P3, that is also written there. The document filed as annexes shall be arranged in chronological order. और इस पार्ट को आप नहीं फॉलो करेंगे, रजिस्ट्री शिद्दत से उठा करके फेंक देगी, कहेगी कि अरेंज करके लाओ तब हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और हम लोग परेशान हो जाते हैं, अरे ये क्या बात है, मैंने तो केस अपने हिसाब से अच्छा बनाया। यू आर ऑन कंटेंट बट दिस इज द रूल एंड इट इज रिक्वायर्ड। आप आगे देख लीजिए, भरत जी को कुछ याद आ रहा होगा, इंदु मैम को कुछ याद आ रहा होगा। Yes, I was just about to note. The document shall not be indexed collectively. कॉली जो बनाते हैं ना हाई कोर्ट में, it is not allowed. And each document shall be indexed separately. The petition, where it refers to annexures and annexures number, shall also indicate it at page number. कुछ भी इन सब में से मिस होगा, रजिस्ट्री एकदम सीधा डिफेक्ट लगा के वापस भेजेगी, और जब तक नहीं अब पूरा करेंगे वो वापस भेजती रहेगी। ये पहला पार्ट है डी का, कि पिटिशन में एनेक्सर्स कैसे अरेंज, पूरी मोरल देखे तो एनेक्सर्स रिगार्डिंग क्या होगा और कैसे अरेंज होगा। इफ द पिटिशनर वांट्स टू प्रोड्यूस any documents which is not part of the record in the court below, he shall make a separate application stating the reasons for not producing it in the court or tribunal below. पहले आप जस्टिफाई कीजिए कि नीचे क्यों नहीं प्रोड्यूस किया गया, एंड द नेसेसिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ दो पार्ट है, आपको दो चीज इस एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा, और वो पार्ट ये है कि पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा स्टेटिंग द रीजंस फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग बिफोर द कोर्ट बिलो, और दूसरा द नेसेसिटी फॉर इट प्रोडक्शन इन द कोर्ट। पहले आपने क्यों नहीं दिया और यहाँ इसकी क्या जरूरत। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल करने वाले में ये एप्लीकेशन में ये दो मैंडेटरी इंग्रेडिएंट आपको जस्टिफाई करना है, यानी ये दो चीज नेसेसरी पार्ट है फॉर एप्लीकेशन। एक जो एप्लीकेशन जो आता है और एडिशनल डॉक्यूमेंट उसके लिए। And seek leave to the court for producing such additional। तीसरा ग्राउंड, तीसरा मतलब यहाँ एक और कंडीशन है, seek leave to the court for producing such additional document। उसके बाद आप कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि अब वो उसको अलाउ करें। सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ प्लीज। सर ये 3(1)(c) एंड डी का ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं सर क्लॉज 2, इसमें डिफरेंस क्या हुआ सर? बिकॉज बोथ आर टॉकिंग अबाउट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। नो, one is talking, where is the additional document? One is talking about additional ground, another is talking about additional document. Both are different things. Ground at the time of argument, it may be oral out of SLP.
whatever ground you mention into the SLP, you may take the additional ground without providing any document. Document is the entirely different thing. Document means document. Yes, yes. Where is the confusion? वो ग्राउंड वर्ड मिस कर दिया था सर मैंने शायद. नहीं, ऐसे मिस करेंगे तो नहीं चलना है ना. यहाँ एक एक वर्ड पे मैं और एंड फुल स्टॉप कॉमा को लेकर के सर फोड़ रहा हूँ मैं. अब तक आप लोगों को आदत पड़ जानी चाहिए. Anyway, ये मिस्टेक होते हैं. But the thing is, you need to be alert on this point. ठीक है? Yes, yes. Okay, and that was the very good questions. अभी वो फिक्स हो गया सर माइंड में. हाँ. The English, next is third, the English version of the relevant provision of the Constitution, statutes, ordinance, rules, regulation, bylaws, order, etc. referred to the impugned judgment. So impugned judgment के अंदर ये बहुत important part है. Impugned on judgment के अंदर जो जो चीज रेफर किया गया होगा, everything shall be filed as appendix to the SLP. So entire D is talking about कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कौन कौन से नहीं होने चाहिए. This is 3(1)D. Am I clear up to this point? थोड़ा और मैं एक्सटेंड कर, थोड़ा और आगे जाता हूँ. हालांकि हमारा टाइम अप हो चुका है, बट आई विल टेक योर 5 or 10 minutes. एवरी पिटिशन, किन्हीं को कोर्ट भी जाना है तो मैं अभी यहीं स्टॉप कर लूँ. और शुड आई कंटिन्यू फॉर द सर आज सेकंड सैटरडे क्या? अगर जल्दी देर तक भी कर सकते हैं. टुडे सैटरडे. ओके, थैंक यू. सेकंड सैटरडे. Okay, so every petition shall be, now I am reading E. Every petition shall be supported by an affidavit. So petition अलग है, affidavit अलग है. Petition is not part of the affidavit, but this is, affidavit should be supported of the petitioner or one of the petitioner as the case may be, or bylaws, any person authorized by the petitioner in which the deponent shall state that the facts stated in the petition are true and the statement of dates and facts furnished along with SLP are true to his knowledge and information on behalf. तो affidavit में क्या होना चाहिए वो भी दे दिया ना. This is the part of proof. आगे और most important part ये है आपका F, जो बहुत रफली और बड़े फास्ट में करूंगा. वो देखिए, द पेपर्स ऑफ SLP शैल बी अरेंज इन द फॉलोइंग ऑर्डर. यदि किसी ने सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल किया है तो वो देखेंगे यहाँ पर कैसे है. सबसे पहले लिस्ट ऑफ डेट इन टर्म्स ऑफ क्लाउज बी ऑफ रूल 1. देन लिस्ट ऑफ डेट्स के बाद यहाँ सिनॉप्सिस वर्ड नहीं यूज किया गया है, ये याद रखिए. Synopsis the integrated part of the list of dates. They are seeking only list of dates, but we are supplying synopsis also. So synopsis यदि मैं नहीं सप्लाई करूं तो सुप्रीम कोर्ट डिफेक्ट फ्री पास करेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि रूल का हिस्सा नहीं है synopsis. Now लिस्ट ऑफ डेट्स होगा पहले, उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इम्पुग्न्ड जजमेंट एंड ऑर्डर होंगे, for which leave to appeal is sought for. दूसरा, उसके बाद SLP petition in the prescribed form 28 होगा. उसके बाद appendix containing relevant provision of constitution, statutes, ordinance, rules and bylaws होंगे. उसके बाद annexes होंगे, if any, filed along with the SLP to the given papers and G. And then माने ये ऑर्डर होगा, इसी ऑर्डर में पेपर बुक अरेंज होगा. तो पेपर बुक किस ऑर्डर में अरेंज होना है वो भी आपको रूल्स में मिलना है. इफ नोटिस इज ऑर्डर्ड ऑन द SLP, द पिटिशनर शुड टेक ए स्टेप टू सर्व नोटिस ऑन द रिस्पोंडेंट. तो नोटिस होने के बाद क्या होगा वो भी आगे की कहानी है. तो अच्छा, दूसरा ये रूल तो 1 हो गया. आप 1 की बात करें, अब रूल सब रूल 2 की बात करें. नो पिटिशन shall be entertained by the registry
रजिस्ट्री को स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, unless it contains a statement as to whether petitioner has filed any petition or SLP to appeal against the impugned judgment or order earlier, and if so, with what result, duly supported by an affidavit on the petitioner or his पैरोकार only. यानी आपका एक स्टेटमेंट वहां होना चाहिए कि इसके पहले या तो आपने कोई फाइल नहीं किया, दैट इज कॉल्ड द रेसिडी, या आपने फाइल किया है और विड्रॉ कर दिया है तो वो वहां पर बताइए। तो एक स्टेटमेंट इन द पिटिशन मैंडेटरी है कि आप इस इम्पोर्ट ऑर्डर के खिलाफ कुछ किए भी हैं या नहीं किए, यदि हाँ तो आप नरेट कीजिए, नहीं हाँ तो वो भी डिक्लेरेशन। यस, आई एम जस्ट कमिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेरी सून। मैं वापस यहाँ आता हूँ, पहले मैं थोड़ा और आगे आ जाऊँ। The court shall, if it is find that petitioner discloses the fact of filing similar petition earlier and it's such and such second petition, if this is pending, if so SLP is already granted, revoke the same. The petition shall also contain a statement whether the matter of this appeals SLP petition shall contain the statement as letter patent appeal petition. रहने देते हैं उसको, अब पूरे को खत्म कर लीजिए। बट रूल 3.1 इंपॉर्टेंट था जो हमने आपको डिस्कस किया। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रूल 4. 4 सेज द पिटीशन शैल बी अकम्पेंड बाय, पिटीशन के पहले वो वाला कंडीशन था, अब उसके बाद क्या होगा? अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर फ्रॉम, ये तो होना ही चाहिए इस पिटीशन में मैंडेटरी। और दूसरा एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ स्टेटमेंट फैक्ट्स कंटेन इन द पिटीशन। नाउ 5 क्या कहता है ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नो एनेक्चर्स टू द पिटीशन शैल बी एक्सेप्टेड अनलेस सच एनेक्चर्स आर सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स which have formed part of record of the case in the court sought to be appended from, provided that uncertified copy of document may be accepted as annexures if such copies are affirmed to be true copies upon the affidavit. समझा आपने? यहाँ ये कह रहा है कि सारे एनेक्सेस के सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, अनसर्टिफाइड भी हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वहां एफिडेविट पे आप ये कहिए कि ऑल आर ट्रू कॉपी। तो यूजुअली सर्टिफाइड कॉपी मंगवाने के बजाय हम लोग ये दूसरा रास्ता है, एनेक्स सॉरी एफिडेविट में ही लिख दिया है कि ऑल एनेक्सेस आर द ट्रू कॉपी ऑफ ओरिजिनल, और सारे एनेक्सेस के नीचे ट्रू कॉपी लिख लेते हैं एंड डन। बोथ ऑप्शन वी हैव। Now, the petitioner shall file. Yes, ma'am. Sir, true copies is declared by the advocate or by the party? आप जरा देखिए, word is there. Word एकदम clear है. Provided that uncertified copy of document may be accepted as annexures if such copies are affirmed to be true copies upon the affidavit. यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, एडवोकेट्स किसी भी केस में अपना एफिडेविट नहीं देते। राइट सर। पहली बात, ये क्यों नहीं देते हैं वो रीजन है, यदि आप एफिडेविट देंगे और वो यदि कंट्रोवर्सी में आ गया तो आप विटनेस बॉक्स में आएंगे। राइट सर, अंडरस्टूड। करेक्ट। यूजुअली एसएलपी के बाद जो ये एफिडेविट जाती है उसी में एक पैराग्राफ हम लोग इंसर्ट करते हैं कि दिस इज द ट्रू कॉपी। आप जरा समझिए कि आप मान लीजिए एफिडेविट ड्राफ्ट कर रहे हैं और उसमें ये ट्रू कॉपी वाला क्लाउज नहीं डाला है, रजिस्ट्री मना कर दी। एक रजिस्ट्री तो छोड़िए, एग्जामिनर भी ढूंढेगा ना। मैं यदि एग्जामिनर होऊंगा या कोई भी आप भी होंगे, अब तो आप ये ढूंढेंगे ना कि क्या क्या होना चाहिए।
और क्यों नंबर कटता है आपको पता चल रहा है अभी कि क्या एक लाइनर होना चाहिए? वन लाइनर लिख दीजिए कि हाँ एफिडेविट है, एक ही पैराग्राफ में एफिडेविट और ये वो। यदि कोई ये डिक्लेयर करे कि ये चीज नहीं, आप आपको मैं आपको थोड़ा दूसरा चीज दिखाना चाह रहा था, वो आप सीधा सीधा आप चले आइए यहाँ पे वो फॉर्म पे, फॉर्म 28, दैट इज द लास्ट वन। फॉर्म 28 पे आप पैरा 3 देख लीजिए, पैरा 4 देख लीजिए, क्या है? The petitioner state that no other petition seeking leave to appeal has been filed by him against the impugned judgment or order as per Rule 3(2). And declaration in terms of Rule 5, the annexures produced along with the SLP are true copies of the pleadings and documents which formed part of the record of the case of court below against। कहाँ से आ गया ये? समझ में आ रहा है ये डिक्लेरेशन कहाँ से आ रहा है और क्यों जरूरी है ये? राइट। और हम जब एसएलपी लिखते हैं एग्जामिनेशन में तो हमारे ब्रेन में ये सवाल आता है कि ये दोनों तो बट ऑब्वियस क्यों लिखूंगा, इसको छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ता है? हम एक अच्छा सा ग्राउंड लिख लेते हैं और क्वेश्चन ऑफ लॉ लिख लेते हैं और वो चल जाएगा। बहुत लोगों को मैंने देखा ऐसा करते हुए और वो निश्चित रूप से 40 के आसपास मार्क्स लेकर के आए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म 28 पे छेड़छाड़ किया है इन दोनों स्टेटमेंट को हटा के। अब मेरा कॉपी देखिए, एक लाइन में ही सही वो लिखा हुआ जरूर, फॉर द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट। Sir, should there also be a declaration in terms of Rule 3(5)? Yes. रूल 3(2) न जो यहाँ फॉर्म है उतना रहने दीजिए, वो जो डिक्लेरेशन है वो एफिडेविट में आ जाता है। Okay. और एफिडेविट यूजुअली हम लोगों को नहीं ड्राफ्ट करना है, तो Okay, देख sir. लीजिए कि कितना केयरफुली और कितना क्लैरिटी के साथ यहाँ दिया हुआ है सारा। Sir. ये हमारी गलती है ना कि हम इस क्लैरिटी को नहीं समझ पाते हैं, है ना? तो दैट्स व्हाट 8 पैरा रजिस्ट्री सबसे पहले 8 पैराग्राफ देखती है ना, भले ही आप एनए लिखे हुए हो। अब आप जरा सोच लीजिए 8 पैराग्राफ आपने नहीं लिखा हो, यहाँ रजिस्ट्री नहीं एग्जामिनर आपको ये 8 पैराग्राफ देंगे और वो डिसाइड करेगा कि AoR वाले साइड में आएंगे या बाहर रहेंगे। बाय वे ऑफ अवॉर्डिंग मार्क्स लेस और मोर, क्या ये हर एक स्टेटमेंट मार्क्स डिजर्व नहीं करता? थोड़ा सा और मैं आपको एक और 2 मिनट और मैं लेना चाहूंगा, 10 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है, और वो मैं आपको एक मिनट ये आप देखिए। तो कहने का मतलब ये 15 रूल मैंने आपको दिखाए थे, 1 से लेकर के 5 तक में मैं अटका पड़ा हूँ। आगे ये भी लिखा हुआ है इसमें कि किस फॉन्ट में होने चाहिए, कितना डबल स्पेसिंग होनी चाहिए, मार्जिन कितना होना चाहिए, एवरीथिंग इज रिटन इनटू दिस रूल, बट एवरीथिंग इज नॉट इन प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस वर्ड में इंसर्ट करूं, जैसे अभी मैंने कहा सर्टिफाइड कॉपी सारे एनेक्सर्स के रिक्वायर्ड है, एक ऑप्शन, या फिर आप दूसरा ऑप्शन चाहिए, दोनों ऑप्शन इन एज पर रूल अवेलेबल है, बट इन प्रैक्टिस हम लोग सेकंड ऑप्शन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। So this is the practice, and what is written there, that is the procedure, isn't it? लेकिन आप ऑर्डर 21 में जाएंगे, ऑर्डर 22 की बात करें, आप ऑर्डर 22 की बात करें तो यहाँ पर ये है ऑर्डर 22। पहले आपको याद होगा ऑर्डर 21 में 2 रूल 1 एंड रूल 2 वाज डेडिकेटेड फॉर लिमिटेशन, फॉर रिफ्यूजल एंड अदरवाइज। यहाँ पर एक ही रूल डेडिकेट किया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन, दैट इज रूल 1। तो जो पार्ट रूल 3 में था इन ऑर्डर 21, ऑर्डर 21 में सेम पार्ट वो रूल 2 में चला है। नाउ अब आप देखिए रूल 2(1), वहां ABCD नहीं है, वो सारा वहीं से अडॉप्टेड था और बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा। यहाँ रूल 2(1) व्हाट सेज,
The provision contained in Rule 3.1 of Order 21. It is directly referring to the previous order, isn't it? Such with necessary modification and adaptation be applicable for the petitions seeking a special leave. Order Rule 3.1 में क्या था? 3.1A क्या था? फॉर्म 28 होना चाहिए. So इसने क्या किया है? 3.1A को नहीं, पूरा रूल 3.1 को रेफर किया है ऑर्डर 21. And shall with necessary modification and adaptation be applicable to these provisions seeking a special leave. पूरा का पूरा वहां से उठा करके यहाँ ले आया. With necessary modification and adaptation. What would be the necessary modification? पहला necessary modification मैं आपको ये बतला दूं. यहाँ पर ये क्या है? रूल 2.1 है ना. तो इस जगह पे जो आपने लिखा था ड्राफ्टिंग ऑन फॉर्म 28 में, यहाँ भी नेसेसरी मॉडिफिकेशन होना चाहिए ना. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3.1 होना चाहिए. नो 2.1. 2.1 ए होगा. ए का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं कंसेप्ट. उसी तरीके से जब यहाँ एक अप हो गया तो सिमिलरली इस जगह पे क्या होना चाहिए? इस पर्टिकुलर प्लेस पे रूल 3.2 होना चाहिए. यहाँ होगा 2.2. यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा. क्योंकि 5 और 4 में आप चेक करके देख लेते हैं कि वहां क्या है. सीधा सीधा ऑन कंसर्न पार्ट पे आते हैं. तो रूल 4 देख लीजिए. 4.2 भी नहीं है. No annexer to the petition shall be accepted unless such annexers are certified copy and such and such, such and such, such and such. अच्छा, उसके लिए डिक्लेरेशन ऑलरेडी है. और रूल क्या था? 4 and 2. कौन सा 2 था? मुझे देखना पड़ेगा. एक काम करते हैं, अभी हम इतना ही छोड़ तो आप मैच कराइए. सर वो 2-3 के अंदर है. बस जो भी है वो आप चेक कर लीजिएगा. बट मुझे मैप कराना था अभी एसएलपी से रिगार्डिंग, और कल मुझे ओरिजिनल जुरिडिक्शन में एंटर करना था. बट मुझे नहीं लगता कि कल मैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन में एंटर कर पाऊंगा. लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा नहीं 136 को, क्योंकि बहुत सारे इप्सन पर्सन क्वेश्चन. सर कल आप क्लास लेंगे मॉर्निंग में? ऑफ कोर्स यस. एवरी सैटरडे संडे इज देयर. और अजय जी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अभी मैं यहाँ पे टर्मिनेट करता हूँ. अजय जी, इन दोनों दिन का वीडियोस आप 3 दिन होल्ड करने के बाद थर्सडे को अपलोड करें. जैसा आदेश करें सर. नहीं, वो इसलिए भी कि नहीं, ठीक है, हम आपसे फोन पे बात करेंगे. यस सर. फोन पे बात करेंगे. अभी वो डिसाइड करना ठीक.